Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. How are you all? Yeah, I'm good, Sasti. Good morning. Good morning. Messi uncle, कैसे है? Good morning. Good morning. Good morning. 6 hours of sleep. Oh, 6 hours is a good. Not more than that. Not more than that for a competitive exam preparing student. 6 बजे 6 घंटा बस हो जाएगा और ज़्यादा नहीं चाहिए. हेलो अभिषेक. कभी कभी आएगा, कभी कभी चल जाएगा क्लास में. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. हाउ इज योर हेल्थ मेसी? कैसा हो गया हेल्थ? अरे ఏమైంది బాబు? अभिषेक के कॉलेज में मेसी गारू को हेल्थ पूरा का पूरा खराब हो गया. गुरु नानक. अरे गुरु नानक ఎక్కడుంటావు నువ్వు అభిషేక్? ఉండే దగ్గర. గుడ్ మార్నింగ్ హర్ష్. No, no, he is not watching alone. Revan. అరే yesterday 2K minutes. మంచి ర్యాంక్ తీసుకొచ్చి మన విజయవాడ పరువు నిలబెట్టాలి బాబు నువ్వు. अरे एक दिन में हाउ मेनी मिनट्स आर देयर? एक दिन में 1440 मिनट्स. 2K मिनट्स कैसा हो जाएगा बेटा? ये क्वेश्चन गलत है ना. सीपीएम में प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करने की जरूरत भी नहीं था बेटा. क्वेश्चन इज रॉन्ग. आपका सीक्रेट निकल जाएगा मेसी हम बात करने के बाद. लिविक बोल रहे हैं आपका सीक्रेट निकल जाएगा क्या? ठीक है, वेरी गुड. अमन, अमन, दिस क्वेश्चन itself is wrong because CPM में there is no probability condition. If it is a uncertain project, सुनो बेटा, if it is an uncertain project, then you think about probability. It is a certain project, so we think 100% probability is there. 100% probability is there, so there is no worries, sir. In CPM, we never talk about probability. Probability is coming, you go to pot. That's it. Probability coming now, you go to pot. Probability is not there. Accurate 100%, you can go CPM. That's it. Chalo. Good morning, Anant. Oh, shifted to Vijayawada. Okay, okay, very good, Abhishek. You are unable to catch up because yesterday's class is very important. Yesterday only new topic started, Abhishek. It is difficult for you to continue from here. Please watch yesterday's class first. Then you can understand. So because it is in the middle, na? It is in the middle, you will confuse. Direct cost versus time. So direct cost versus time we are talking. Then when you consider direct cost versus time, what is direct cost? बताओ, all costs which are directly involved with the okay Abhishek, done. All costs which are directly involved with the objective of project objective fulfill करने के लिए, that is costs related to, very important, actual work done to finish the project. Costs related to actual work done to finish the project is a direct cost. Actual work to finish project completion के लिए क्या क्या काम कर रहा है, actual काम, that comes under like design, plans, drawings, layouts, construction, electrical and plumbing works. All these are related, etc. for a civil engineering project. हाँ, डायरेक्ट कास्ट वर्सेस टाइम बात कर रहे हैं अभी. हम ये डायरेक्ट कास्ट वर्सेस टाइम बात करेगा. सो फर्स्ट वी टॉक व्हाट इज अ डायरेक्ट कास्ट, देन वी टॉक अबाउट टाइम ना मेसी अंकल. पहले ये बात करना पड़ेगा व्हाट इज अ डायरेक्ट कास्ट. हेलो संजीव, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग. चलो. So design, plans, drawing, layouts, construction, electrical and plumbing works for a civil engineering project. That is comes under direct cost. हो गया ना? हाँ संजय, एक्सेलेंट. चलो बेटा. Direct cost is distinguished as normal cost, crash cost. श्रीलंकन गारू कहाँ चले गए बेटा? डायरेक्ट कास्ट इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू, नॉर्मल कास्ट एंड क्रैश कास्ट. ये नॉर्मल कास्ट क्या है? दिस इज
डायरेक्ट कॉस्ट रिक्वायर्ड, डायरेक्ट कॉस्ट रिक्वायर्ड क्या करने के लिए? टू फिनिश एन एक्टिविटी, टू फिनिश एन एक्टिविटी विद इन इट्स नॉर्मल रेगुलर ड्यूरेशन. सो एक्टिविटी को हम पहले सीपीएम में कुछ टाइम दिया ना, इन सर्टेन पीरियड. सो वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम सीपीएम, चेंज एज पर PERT, देन अगेन चेंज एज पर क्रैशिंग. सर नो, हम पहले कहां से स्टार्ट किया? सीपीएम से स्टार्ट किया. देन सीपीएम के बाद एक्सट्रीम टाइम, वर्स्ट टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम लेके देन वी फाइंड आउट एक्सपेक्टेड टाइम इन PERT. देन ये एक्सपेक्टेड टाइम से क्रैश करने की कोशिश कर रहा है. ये पूरा का पूरा छोड़ के पहले फर्स्ट क्या ले लिया सीपीएम नेटवर्क में, ये टाइम लेके नॉर्मल टाइम, टेकिंग दैट नॉर्मल टाइम फ्रॉम सीपीएम नेटवर्क एंड हाउ मच कॉस्ट इज रिक्वायर्ड टू फिनिश द एक्टिविटी. That is called normal cost. That time which is required to finish the activity as per the time obtained from CPM activity, that cost is called normal cost. So we can represent this. We can represent normal cost NC. So people will write CN also, but if I write CN again cost normal confusion. So we can write in our own language. In our own language, no problem. Denotation कुछ भी चलेगा, फार्मूला समझ होना चाहिए, सिंपल. So NC you can write. टेक्स्ट बुक में कोई मटेरियल में डिफर लगेगा, ये छोड़ दो, हमको नहीं चाहिए. हमारा समझ होने वाला लैंग्वेज में लिखो, फार्मूला याद करने का इजी आसान हो जाएगा. So you can take normal cost as NC. Same crash cost as CC. नॉर्मल कॉस्ट एज एनसी, क्रैश कॉस्ट एज सीसी. ये क्रैश कॉस्ट क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट रिक्वायर्ड. क्रैश कॉस्ट अगेन डायरेक्ट क्रश. अरे क्रश नहीं, अरे हम क्रश्मिका का बारे में नहीं बात कर रहे बेटा, क्रश्मिका का बारे में नहीं बात कर रहे, क्रैश क्रैश का बारे में बात कर रहे. सो क्रैश कॉस्ट इज ए डायरेक्ट कॉस्ट. डायरेक्ट कॉस्ट रिक्वायर्ड टू फिनिश एन एक्टिविटी, टू फिनिश एन एक्टिविटी, टू फिनिश एन एक्टिविटी विद इन क्रैश टाइम, विद इन क्रैश टाइम, क्रैश टाइम में खत्म करने के लिए. So yesterday we said Messi Garu wanted to visit Goa. The total plan is 10 days. He crashed to 5 days. So that cost for 10 days is normal cost. Cost for 5 days is crash cost. Understand? For example, you need to finish one activity, one work in 10 days where 5 people are involved. Now you increase the persons, 10 persons, and you are making it to finish in 5 days. Time कम हो गया, but number of persons doing the work increased. Ultimately cost ज्यादा हो जाएगा. सर नो बेटा, cost increase हो जाएगा ना? Cost increase हो जाएगा ना, हो जाएगा बताओ. You are going to finish a simple बोल दिया. ये work to be finished, ये work completed. We are doing in a childhood this kind of questions. ये work completed in 10 days by 5 persons. Now you are allotting, you need the work to be finished in 5 days. So how many persons you are allotting? You are allotting 10 persons. 5 days करेगा. तो factors हो जाएगा पक्का, मन करो. Factors are there, हो जाएगा. Or else what you are doing? You need to finish in 5 days. You are taking 7 persons, increasing working time, and also trying to finish in 5 days. You are requesting other employees. Ask them to stay 2 more hours per day. So it can increase the cost. But at the same time, only cost for 2 persons increased. हाँ, only overtime is there, 2 persons cost is there. But at the same time, indirect cost increase हो जाएगा ना. एक आदमी 8 hours काम करने वाले को आप 11 hours काम करने को रिक्वेस्ट कर दिया. Then you need to provide snacks, chai biscuit. Extra 3 hours काम कर रहे हैं ना पड़ा. So that will be indirect cost. That indirect cost increase हो जाएगा because of that activities. Maybe you are paying, not paying. That is secondary. Nowadays, no organization is. That is what Revant Garu बोल रहे हैं. Nowadays, no organization is providing overtime extra salary. Not only civil engineer, बेटा. Not only civil engineer. India में हर जगह में कोई आदमी को overtime का पैसा नहीं दिएगा. No organization is running as per norms, labor rules. So आप 8 घंटा काम करो, 10 घंटा काम करो, 12 घंटा काम करो, same salary. किसी को OT नहीं मिल रहे. So only extra benefit क्या बोल रहे हैं? क्या दे रहे कंपनी? कंपनी दे रहे क्या दे रहे कंपनी? चाय बिस्किट, नाश्ता दिएगा बस. So that is indirect cost ज्यादा हो. काम इतना हो जाएगा बस. चलो. So that cost which is required to finish activity within crash time, that is called crash cost. So now we can differentiate the time also. This is completed writing, this is finished writing बेटा. अरे सॉफ्टवेयर कंपनी में टीम लीडर दिएगा प्रोजेक्ट खत्म करने के लिए, नहीं होगा प्रोजेक्ट नहीं खत्म करेगा आदमी. एक कोडिंग वाला बनने वाला प्रोग्रामर कुछ नहीं करेगा. तो डेडलाइन आ गया, 2-3 दिन में डेडलाइन आ गया, ये बोलेगा आप खत्म करो, आपको रात को पार्टी मिलेगा. देन इमीडिएटली काम हो जाएगा. 30 दिन में काम नहीं हो जाएगा, 1 दिन में काम हो जाएगा पार्टी बोलने के बाद. So time also we can differentiate into two. Normal time, crash time. So normal time, standard time. Normal time is a standard time to finish an activity. Which is provided by the estimator. So an estimator usually allowed to finish a particular activity to be completed. So as per our civil engineering terms, for quality, for strength, for durability. Wall आज कंस्ट्रक्शन हो गया, wall कंस्ट्रक्शन हो जाएगा. Whatever the length of the wall, एक दिन में खत्म हो जाएगा कंस्ट्रक्शन. सिर्फ
इमीडिएटली प्लास्टरिंग करेगा आप? बताओ, सिर्फ 5 दिन या 6 दिन या 10 दिन क्यूइंग करना पड़ेगा, अच्छे से क्यूइंग करना पड़ेगा। क्यूइंग करने के बाद भी प्लास्टरिंग को चलना पड़ेगा। आफ्टर प्लास्टरिंग, आज प्लास्टरिंग कर दिया, इमीडिएटली वॉल को पेंट लगा देंगे? नो, अगेन प्लास्टरिंग, अगेन इट शुड बी क्यूड आफ्टर प्लास्टरिंग, अगेन 1 वीक 10 days 15 days होना चाहिए। आफ्टर क्यूइंग अगेन यू गो फॉर पेंटिंग। सो दैट इज द स्टैंडर्ड टाइम एज पर प्रोटोकॉल। 3 ऑब्जेक्टिव्स, फर्स्ट क्वालिटी, सेकंड स्ट्रेंथ, थर्ड ड्यूरेबिलिटी। कंसीडरिंग दिस 3 द स्टैंडर्ड टाइम अचीव्ड बाय एस्टिमेटर। समझ आ रहा है? कंसीडरिंग क्या क्या चीज है? क्वालिटी, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। क्वालिटी, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी, ये बोल रहे हैं नॉर्मल टाइम, दैट वी कॉल इट एज नॉर्मल टाइम। समझ आ रहा है? नॉर्मल टाइम। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्रैश टाइम। क्रैश टाइम, minimum possible time, lowest time, this is minimum possible time, minimum possible time within which an activity is completed. An activity is completed, very important. Minimum possible time within which an activity is completed. Unknown. By kaisa? Increase of resources. Increase of resources. By increasing resources, you can finish the activity. By increasing resources, you can finish the activity. By increase of resources. By increase of resources. Very important. Without affecting quality, strength and durability. So queuing का टाइम हम कम नहीं करेगा ना. You may take 10 people, you may take 15 people, you may take 100 people to construct the wall. Wall construction time कम हो जाएगा. 5 days में construct करने के बाद 3 दिन में construction हो जाएगा. But सिर्फ queuing time is constant. Means you are not at all reducing the time required to achieve the quality. We are reducing the time required to put the effort. Manual work का time कम करना पड़ेगा. Quality achieve करने का time कम मत करो. समझ लो बेटा. Manual effort हो जाएगा ना, manual effort. So you can reduce construction time. Yes, construction time. सुनो, मिस्सी अंकुल एनवायरमेंटल क्लास का बारे में सोच रहा है पहले बार. मिस्सी अंकुल फर्स्ट टाइम वाचिंग एनवायरमेंटल, ही लुक्ड, अरे बाबा 160 आवर्स इज देयर, ये काम करेगा, हम 2x में चलेगा ऐसा सोच के 80 आवर्स में खत्म करेगा. अरे पहले बार करने वाला 2x में चलने के बाद दिमाग खराब हो जाएगा. इफ इट इज सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, ओके 2x में हो जाएगा. पहले बार करने वाला 1.5 इज ओके, बिकॉज़ वी आर गोइंग स्लोली. एनीवे केपी सर इज टीचिंग स्लोली, सो ही कैन गो विद 1.5. 2x 2.5x करने के बाद जिंदगी बर्बाद हो जाएगा. व्हाट इज द यूज? क्वालिटी खराब हो जाएगा, नॉलेज नहीं हो जाएगा, एंड दैट 80 आवर्स आल्सो गेटिंग वेस्टेड. दैट व्हाटएवर 80 आवर्स यू आर स्पेंडिंग आल्सो गेटिंग वेस्टेड. So you can reduce that 160 to 1.5x mode डाल के 1.5x mode डाल के 160 to 120 करो, but not 180, so but not 80, but not 80. 160 to 120 hours हो जाएगा बस, that is good, but not to 80 hours. Instead of taking long time, ऐसा सुनो, for example 160 to 120 ना, 120 ले लिया, 120 you feel that 120 hours are there, I can watch every day 10 hours 12 days. every day 10 hours 12 days 10 hours सुनने के बाद preparation revision कैसा करेगा? So every day 6 hours सुनो, every day 6 hours सुनो, 20 days में खत्म करो, अच्छा हो जाएगा. 6 hours अच्छे से सुनो, notes लिखो, revise करो, revise क्यों solve करो, हो जाएगा. That is what I am saying ना, ये सब मत करो. Every day 6 hours सुनो, 20 days में हो जाएगा. So like that you can plan the schedule, like that you need to plan the schedule without disturbing the quality, effectiveness of preparation, effectiveness of getting knowledge. Same the construction activity में quality of construction, strength of structure, durability of structure disturb मत करना पड़ेगा. समझ आ रहा है? Quality of construction, strength of structure, durability of structure disturb मत करना पड़ेगा. You just increase the number of resources. The number of resources increase करने के बाद you can do anything. समझ आ रहा है बेटा? चलो. And ये बोल रहे हैं normal time ना, NT. Normal time we can give NT. Crash time we can give CT. Normal time NT, crash time CT. Chalo. So we have two types for cost, two types for times. For cost, normal cost, crash cost. For time, normal time, crash time. Now we are going to plot the curve. Now we are going to plot the curve, beta. Refresh करो संजीव. एक बार refresh करो ना संजीव भैया. Please refresh once. You can get it. Chalo, we are taking cost on y-axis, time on x-axis. Cost on y-axis, time on x-axis. You are giving more time. You are giving more time. Resources will be less. Then ultimately cost. बताओ बेटा, you are giving more time. You are giving this much time. Resources will be less. अरे resources less हो गया ना. Cost increase कैसा हो जाएगा? Cost increase कैसा हो जाएगा? You are giving more time, low resources. अरे एक wall construction करने के लिए सिर्फ 2 लोग दे रहे हैं आप. टाइम ज्यादा हो जाएगा बट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम हो जाएगा. ये एक वॉल कंस्ट्रक्शन करने के लिए 10 लोग दे रहे कम टाइम में खत्म करने के लिए कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा. अंडरस्टैंड दिस? आर यू गेटिंग दिस? प्लीज आर यू गेटिंग दिस और नॉट? आर यू गेटिंग दिस और नॉट? सो इट इज लाइक एक्सपोनेंशियली फॉलिंग कर्व. ऐसा फॉल डाउन करेगा, एक्सपोनेंशियली फॉल डाउन. ऐसा नो
एक्सपोनेंशियल, हाँ, टाइम मोर कास्ट लेस, टाइम एंड कास्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये बात बताओ, सुनो एक बार। कल हम बोल दिया, कल हम बोल दिया ना, इनडायरेक्ट कास्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। यस्टरडे ड्रा किया नहीं किया? यस्टरडे ग्राफ। So today what we are going to do? Today we are discussing direct cost, not indirect cost. It is inversely proportional to time. Please understand. It is inversely proportional to time. So you are saying according to yesterday concept, मिसी गारू, yesterday कल हम क्या बात किया? Indirect cost के बारे में बात किया। आज का concept different था ना, direct cost के बारे में बात कर रहे हैं। आज का concept is about direct cost, इनका बारे में बात कर रहे हैं। So when you are taking a normal time, so this will be your normal time, NT, your normal time NT. This will be your normal cost. खुश हो जाएगा? कम कास्ट में थोड़ा टाइम लगेगा, खत्म हो जाएगा। कम कास्ट में थोड़ा टाइम लगेगा, खत्म हो जाएगा। You crash the project. You crash the project. क्रैश करने के बाद देखो टाइम कम हो गया, सीटी क्या हो गया, कास्ट क्या हो गया बेटा, बताओ क्या कास्ट है? सीसी। समझ आ रहा है? टाइम कम हो गया, कास्ट ज्यादा हो गया। अरे व्हाट इज योर हेडिंग मिसी अंकुल? इधर ओके। पहले आज क्लास शुरू करने का पहले क्या बोल दिया हम? व्हाट इज योर हेडिंग? हाँ, देन सो इधर भी लिखो, डायरेक्ट कास्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। डायरेक्ट कास्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। So ऐसा लिखो, if work is to be finished in urgent mode, what happened? Cost is high. तो ये सिंपल लॉजिक बेटा सुनो, ये सिंपल लॉजिक है। मिस्सी गारू पाटना में था, इनका जेड गारू बॉम्बे में था। सो पाटना से बॉम्बे चलने के मिस्सी गारू ट्रेन बुक किया। ट्रेन में 42 आवर्स लगेगा, 42 आवर्स टू ट्रैवल। अरे ऐसा सोच लिया मिस्सी अंकुल, 42 आवर्स में सिर्फ 1000 रुपीज में चलेगा ट्रेन में, 1000 रुपीज में चलेगा ट्रेन में, 42 आवर्स टाइम लगेगा, 1000 रुपीज। मिस्सी अंकुल ऐसा सोच लिया, अरे जेड को मिलने के इतना टाइम क्यों वेट करेगा, जल्दी जल्दी लेना पड़ेगा, जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा। सो ही हैज टेकन ए फ्लाइट, एरोप्लेन फ्रॉम पाटना टू मुंबई एरोप्लेन, 10,000 रुपीज। अरे हमको पैसा नहीं चाहिए, जेड को जल्दी मिलना पड़ेगा, टू गो एंड रीच जेड गारू, दैट 10,000 रुपीज इज द फ्लाइट कॉस्ट। सो 2 आवर्स में हो जाएगा, जस्ट 2 आवर्स पाटना टू मुंबई खत्म, 40 आवर्स बच गया, 40 आवर्स आर सेविंग। बट ये सुनो बेटा, 40 आवर्स आर सेविंग, व्हाट इज द कास्ट इंक्रीज? Please tell me, what is the cost increased? 9,000 rupees. 9,000 rupees is the cost. No, not 9,000. Because he is going by train. 42 hours. खाना खाएगा, पानी पिएगा, और कुछ टाइम पास के स्नैक्स खाएगा, और 1000 रुपीज एक्स्ट्रा हो जाएगा। इनडायरेक्ट कास्ट इज देयर, 1000 रुपीज एक्स्ट्रा। बताओ बेटा, 1000 रुपीज एक्स्ट्रा ना इनडायरेक्ट कास्ट। सो 8,000 ओनली सेविंग्स, दैट इज व्हाट वी आर मिसिंग। सेम इनडायरेक्ट कास्ट ज्यादा हो जाएगा उधर। तो इनडायरेक्ट कास्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इनडायरेक्ट कास्ट है खाना, समझ आ रहा है? स्नैक्स खाना के लिए इनडायरेक्ट कास्ट ज्यादा हो गया। सो नॉट 9,000, 1000 रुपीज इनडायरेक्ट कास्ट, 1000 रुपीज डायरेक्ट कास्ट, 2000 टोटल कास्ट। फ्लाइट में टोटल कास्ट 10,000, सो 8,000 इज द डिफरेंस। समझ आ रहा है व्हाट इज इनडायरेक्ट कास्ट नाउ? समझ आ रहा है बेटा इनडायरेक्ट कास्ट क्या है? चलो इज दिस क्लियर नाउ? अरे बाबा, वेरी गुड। चलो हो गया दिस वन। अरे till yesterday Debu Malia is our example. Debu Malia is our example. Okay, next onwards Debu only Revant. Next onwards Debu only our target. Don't worry. कास्ट स्लोप बोल रहे हैं हम। कास्ट स्लोप क्या है? इट इज स्लोप ऑफ डायरेक्ट कास्ट करो। कैसा आएगा कास्ट स्लोप? स्लोप ऑफ डायरेक्ट कास्ट करो। कैसा हमारा डायरेक्ट कास्ट करो कैसा हो गया बेटा, बताओ? इट इज एक्सपोनेंशियली फॉलिंग ना, डायरेक्ट कास्ट ऑन y axis, time on x axis. But for project analysis what we are doing, we are taking it as a straight line. So slope of direct cost curve very important. After considering as a straight line for analysis, हमारा analysis करने के लिए, समझ रहा है? To make our analysis easier, we are making it. So this is CC, CT. This is NC, NT, NC. ये स्लोप आ गया ना? दिस इज कास्ट स्लोप, दैट इज कास्ट स्लोप। ये बोल रहे हैं। अरे ये अनअकैडमी वाला बार बार हमको क्यों मैसेज कर रहे बेटा सब्सक्रिप्शन लेने के लिए? कास्ट स्लोप। सो नाउ कास्ट स्लोप इज CS. डिफरेंस इन कॉस्ट, क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट, देन shall we take crash time minus normal time? Cost slope is equal to crash cost minus normal cost divided by crash time minus normal time. Crash time कम हो गया ना, crash time is कम हो गया ना, normal time is more, higher. Normal time minus crash time. Normal time minus crash time. आसान वाला दिएगा। CS is equal to CC minus NC upon NT minus CT. CS cost slope is equal to
कास्ट स्लोप इज इक्वल टू सीसी माइनस एनसी, सीसी माइनस एनसी अपॉन एनटी माइनस सीटी। स्टार मार्क डालो बेटा। कास्ट स्लोप सीसी माइनस एनसी अपॉन एनटी माइनस सीटी। ये समझ आ रहा है? इनके बारे में और कुछ बात करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर और शैल आई से एनीथिंग? So we have two curves, no? We have two curves. One is the direct cost curve, another one is indirect cost curve. Cost is total cost, no? Which is the sum of direct and indirect. Mahima, just cost you are saying that is the total cost, sum of direct and indirect. सी गारू मुंबई चलने के लिए कास्ट क्या है? 1000 रुपीज ट्रेन फेयर, 1000 रुपीज खाना के लिए, 2000 रुपीज दैट इज कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट क्या है? सिर्फ मुंबई चलने के लिए ट्रैवलिंग 1000 रुपीज लेना, ओनली 1000 रुपीज लेना महिमा, दैट इज जर्नी कॉस्ट। जर्नी में कुछ खाना वगैरह, चाय चाय पीने के लिए, बिस्किट खाने के लिए, स्नैक्स, तो पूरा का पूरा इनडायरेक्ट हो जाएगा। दैट सम दैट इज टोटल कॉस्ट। चलो, वी हैव टू कर्व्स, बोथ कर्व्स आर टेकन and plot on a single curve, superimposing two curves, superimposing two curves. Both curves are superimposed on one another, both curves are superimposed on one another. So here you are taking cost now, here you are taking time. So first what you are taking, what cost you are taking? First you are taking direct cost, first you are taking direct cost. So direct cost लेने के बाद कर्व ऐसा आएगा, आपको मालूम था? डायरेक्ट कॉस्ट लेने के बाद कर्व कैसा आएगा मालूम था? ये भी था ना? नो एनालिसिस सिर्फ ये मॉडिफाइड वाला ना रेवंत, ये मॉडिफाइड वाला एक्चुअली ऐसा नहीं करेगा। ओरिजिनल इज दिस वन, ओरिजिनल इट इज नॉट लीनियरली इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इट इज एक्सपोनेंशियली इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो हम कल बोल दिया इनडायरेक्ट कॉस्ट को लीनियरली इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लीनियरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनडायरेक्ट कॉस्ट को। इधर डायरेक्ट कॉस्ट इज एक्सपोनेंशियली इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक्सपोनेंशियली होगा तो स्ट्राइट लाइन नहीं आएगा। ओनली हमारा एनालिसिस मैथमेटिकल डेरिवेशन प्रोजेक्ट के लिए लीनियर करा दिया, प्रोजेक्ट के लिए लीनियर करा दिया बस। सो दिस इज द डायरेक्ट कर्व, डायरेक्ट कॉस्ट। नाउ इनडायरेक्ट कॉस्ट कर्व आएगा अभी, इनडायरेक्ट कॉस्ट कर्व इस आएगा ना, इनडायरेक्ट कॉस्ट कर्व। दिस इज व्हाट वी कॉल indirect cost curve, linearly proportional, linearly directly proportional. indirect cost curve versus direct cost curve, indirect cost curve versus direct cost curve. ये समझ आ गया? अभी तक पहुंच गया? समझ आ गया बेटा? तो हम ये बोल रहे हैं this is normal time, that is why this is normal cost, normal time, normal cost. This is crash time, this is crash cost, crash time, crash cost. Then ये क्या है? This is the actual optimum time, optimum time where they both will intersect, na? Both will intersect at what point? At what point they both will intersect? They both will intersect at what point? That is optimum time, optimum time बोल रहे हैं, optimum time. इनका cost आएगा, इनको optimum cost बोल रहे हैं, optimum cost. तो ये कर्व कैसा आएगा? We'll draw the curve, optimum time, optimum cost curve separately. ये ऐसा आएगा, देखो बेटा, optimum time and optimum cost curve ऐसा आएगा ना। देखो this is only total cost curve, this is a total cost curve, total cost curve which is optimum cost curve ऐसा आएगा। total cost versus total time, total cost versus total time, which is like this, and this is optimum time, this is optimum cost. ये देखो, what is highest value here? This is crash, समझ आ रहा है? This is crash वाला का टाइम, ये वाला नॉर्मल वाला, दिस इज नॉर्मल वाला का टाइम ना। समझ आ रहा है बेटा? सो क्रैश, ऑप्टिमम, नॉर्मल मींस वी नीड दोनों ऑप्टिमम होना चाहिए हमको। समझ आ रहा है? कॉस्ट एज वेल एज टाइम दोनों ऑप्टिमम लेना पड़ेगा हम, नो लीनियर नहीं है, नॉर्मल इंक्रीज हो गया बिकॉज नॉर्मल इंक्रीज होने के बाद इनडायरेक्ट कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा। डायरेक्ट इज डिक्रीजिंग रेवंत, बट इनडायरेक्ट देखो, नॉर्मल को इनडायरेक्ट क्या हो गया बेटा? समझ आ रहा है? इनको इनडायरेक्ट ज्यादा हो गया ना, दैट इज व्हाई इनको इनडायरेक्ट ज्यादा हो गया। सो हमको दोनों नहीं चाहिए, नॉर्मल भी चाहिए, क्रैश भी नहीं चाहिए, ऑप्टिमम टाइम, ऑप्टिमम कॉस्ट लेना पड़ेगा। दैट इज द फाइनल ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रैशिंग। समझ आ रहा है? व्हाट इज फाइनल ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रैशिंग? क्रैशिंग को फाइनल ऑब्जेक्टिव दोनों टाइम एज वेल एज कॉस्ट ऑप्टिमम होना चाहिए।
This is done. This is done. No. Okay, go ahead. Finish this. I will be back in a minute. Crash is on top and normal is at any point. Crash is always on top, no doubt. Crash is always on top. Normal, that is depending upon time duration. Normal will vary because crash 100% we know. Crash will be the highest cost, lowest time and highest cost. Crash को मालूम था ना? Crash क्या है? Crash करने के बाद आपको crash करने के बाद lowest possible time मिलेगा. Lowest possible time मिलेगा. And so what happened? Highest cost. But normally ये आसपास सेम हो जाएगा. देखो अमन, देखो मान लिया फ्लाइट में चलेगा, ट्रेन में चलेगा, सॉरी ट्रेन में चलेगा, बस में चलेगा, आसपास में सेम कास्ट रहेगा ना. बस फेयर ट्रेन फेयर सेम हो जाएगा नॉर्मल. सो ये 42 आवर्स था, मे बी 45, मे बी 48, बस नियरली सेम हो जाएगा नॉर्मल. चलो फाइनल ऑब्जेक्टिव आफ्टर क्रैशिंग, फाइनल ऑब्जेक्टिव आफ्टर क्रैशिंग is to achieve optimum duration at lowest possible cost. Why lowest possible cost? क्या बोल रहे हैं बताओ? Since cost is higher for both crash time and also normal time. देखो एक बार, this is only lowest possible. normal time को cost ज्यादा है, crash time को भी ज्यादा है. normal cost is greater than optimum cost, crash cost is greater than optimum cost. So cost is higher for both crash time and normal time, but for optimum time को cost is क्या हो गया? optimum time को cost क्या हो गया बेटा? optimum time को cost lowest possible हो गया, lowest possible हो गया. So achieving minimum possible duration at lowest possible cost, at lowest cost is crashing. समझ आ रहा है? रूल टू बी रिमेंबर्ड, स्टार मार्क दे दो. हम सोच रहा है क्लास क्रैश करके जल्दी जल्दी पहुंचना पड़ेगा. मिस्सी गारू सोच रहा है नॉर्मल टाइम में होना चाहिए क्लास. सो पूरा बर्बाद करके ऑप्टिमम टाइम में चलेगा फाइनली. कहां चले गए देबू मालिया? देबू मालिया, रूल टू बी रिमेंबर्ड ड्यूरिंग क्रैशिंग. अरे आई थिंक देबू मालिया गारू फील हो गया, आपका नाम नहीं आ गया, चले गए. ओके देबू मालिया आपका नाम आएगा, रुको क्लास में. मिस्सी गारू का नाम नहीं बोलेगा, आपका नाम भी बोलेगा बेटा देबू, रुको क्लास में. रूल टू बी रिमेंबर्ड ड्यूरिंग क्रैशिंग, वेरी इंपॉर्टेंट. स्टार मार्क डालो, पुट स्टार मार्क्स प्लीज. वेरी इंपॉर्टेंट रूल टू बी रिमेंबर्ड ड्यूरिंग क्रैशिंग. Crashing is done, crashing of an activity is done, crashing of an activity is done only if cost slope is less than or equal to indirect cost. Because cost slope is nothing but cost spent for crashing. Cost slope is nothing but cost spent for crashing. So cost slope less than or equal to indirect cost. You are spending for one day to crash the project, you are spending extra 150 rupees. For that one day indirect cost is 300 rupees. So you are happy only na? One day indirect cost is 300, crash cost is 150. So that is easy only na? I will tell you example liko. Normal time is 5 days. Every day indirect cost. Normal time is 5 days. Every day indirect cost 200 rupees. Okay, every day indirect cost is 200 rupees. Now crash time is taken 4 days. So cost increased 100 rupees to crash. Then is it profitable? Shall we crash? You are spending 100 rupees only na. Total savings 200 rupees
indirect minus 100 rupees for crashing. So 100 rupees is the savings only, na beta? Because you reduced one day that 200 rupees indirect cost is reduced. You reduced one day that 200 rupees indirect cost is reduced. Na? सुनो बेटा, 200 rupees indirect cost is reduced ना? ये बात सुनो. I will tell you a very simple easy example. हाँ वो भी बोल रहे हैं. 5 days के लिए 200 rupees, 1000 rupees indirect cost. Okay? And the direct cost of project. It is not related to time. Total work finishing time, direct cost. Total work finishing time 4000 rupees. So 5000 rupees total cost. Total cost. When it is before crashing. Okay? Okay, before crashing. Before crashing. After crashing, will direct cost anything changing? Direct cost anything changing? Direct cost 4000. Extra resource ले लिया. ये extra resource के लिए crash cost. Extra resource के लिए crash cost 100 rupees. 100 rupees. Then indirect cost क्या है? Indirect cost क्या है? Now it is 4 days only ना? 4 days only ना? 4 days. So क्या हो गया? 4900 rupees. So 1 day duration reduced, 1 day time reduced, 100 rupees cost reduced. बहुत पॉसिबल हो गया. देखो बहुत पॉसिबल हो गया. 1 day time reduced, 100 rupees cost also reduced. समझ आ रहा है अभी? Direct cost is fixed. Direct cost is fixed, but additionally crash cost added. I will give you formula, don't worry. So we can say like this. अरे रुको बेटा, we can say like this. रुको, I will tell you ना. Before crashing, रुको देबू मालिया, please. Wait, I will give the slide. Before crashing, what we will say? Total cost. Total cost is equal to direct cost plus indirect cost. Direct cost plus indirect cost. Indirect cost क्या है? Indirect क्या cost क्या है? Time into indirect cost per day. Time into indirect cost per day. Now this is a normal time. At that time it is a normal time. Now after crashing क्या हो रहा है? After crashing formula same हो जाएगा. Formula same हो जाएगा after crashing. Total cost formula. Direct cost to be taken as it is. Don't change direct cost. Not changing direct cost. Plus इनको additionally crash cost आएगा. Plus indirect cost. अब indirect cost formula क्या है? Crash time into indirect cost per unit time. समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? Crash time change हो गया normal time से crash time हो गया indirect cost में. Total cost में crash cost add हो गया. अब समझ आ रहा है बेटा? सुनो. Yes, correct. मिस्सी गारू बॉम्बे चलने के लिए फ्लाइट ले लिया. एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस क्या है? एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस क्या है मिस्सी गारू को? 8000 बोल दिया ना. 8000 इज एडिशनल एक्सपेंसेस. 8000 एडिशनल एक्सपेंसेस. बट 2 डेज का टाइम सेव हो गया. हर एक दिन को मिस्सी गारू का सैलरी 5000 रुपीस. 2 दिन काम करने के बाद 10000 मिल गया मिस्सी गारू को. नाउ मिस्सी गारू इज इन प्रॉफिट और नॉट? टाइम में कुछ काम नहीं करेगा. टाइम में लीव ले लेंगे. लीव लेने के बाद ये 10000 नहीं मिलेगा. बट फ्लाइट में चलने का टाइम में काम करेगा. जॉब को चलेगा. हर एक दिन 5000 प्लस 5000 10000 सैलरी आ गया. सो 8000 खर्चा हो गया. कोई प्रॉब्लम नहीं. और 2000 प्रॉफिट ओनली. 2000 में गिफ्ट लेके चलेगा जेड को. 2000 में जेड को गिफ्ट लेके चलेगा मिस्सी गारू. अरे इतना कुछ में एसएस बोल रहे, देखो इतना कुछ में एसएस बोल रहे मिस्सी अंकल. चलो देखो कंप्लीटेड राइटिंग. So you understand now? Crash cost must be less than indirect cost. Crash cost per day must be less than indirect cost per day. Then only crashing successful. Otherwise crashing not done. ये सीक्रेट रिवील नहीं करेगा ना देवो मालिया. ये सीक्रेट सिर्फ केपी सर को मालूम था, आपको रिवील नहीं करेगा. Done everyone? चलो this one. हो जाएगा आपका विश ट्रू हो जाएगा. आकाश मीना, डोंट वरी. देयर इज अ बिग रोल ऑफ जेड इन मिस्सी गारू सक्सेस. सो डोंट वरी, जेड के साथ इंटरव्यू ले लेंगे हम. चलो विल कंसीडर हियर. क्या हो गया यश जी? crashing is accepted कब? crashing is accepted if crash cost per day less than or even equal to indirect cost per day. हाँ, indirect cost को भी इक्वल होगा तो भी क्रैशिंग करेंगे क्योंकि हमको टाइम कम हो गया. कास्ट में चेंज नहीं है. क्रैशिंग इज स्टॉप्ड
crashing is stopped if crash cost per day greater than indirect cost per day. Crash cost per day greater than indirect cost per day. So what is crash cost now? Crash cost is equal to sum of cost to slope of activities, crash, sum of cost to slope of activities crash. So एक दिन में एक एक्टिविटी भी क्रैश हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एक दिन में दो एक्टिविटी, तीन एक्टिविटी क्रैश हो गया तो ये पूरा दो या तीन एक्टिविटीज का सम कॉस्ट होना चाहिए हमको, समझ रहे? यू आर रिड्यूसिंग project duration by 1 day. On that 1 day only one activity going on, then crash cost is equal to cost to slope of that one activity. But on that 1 day parallelly 3 activities going on, हर एक activity को cost to slope different है. So cost to slope of activity 1, cost to slope of activity 3, cost to slope of activity 5, all 3 activities parallel activities, इनका sum crash cost होना चाहिए. That is sum of cost to slope of activities crash. If parallel activities are there, that is important. Parallel activities are not there, only one activity is there, no issue. Crash cost is equal to cost to slope. समझ आ रहा है बेटा? देवू माल्या समझ आ रहा है? मिस्सी गारू only traveling Patna to Mumbai, no problem. Parallelly Z गारू coming Delhi to Mumbai. देन ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा. देन जेड गारू का टाइम, जेड गारू का सैलरी, जेड गारू का क्रैश कॉस्ट पूरा का पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा. दैट इज अ पैरेलल एक्टिविटी. इफ ओनली मिस्सी गारू वर्किंग, मिस्सी गारू ओनली गोइंग, दैट इज अ सिंगल एक्टिविटी. मिस्सी गारू का कॉस्ट तो बस हो जाएगा. सो विल गो अहेड नाउ. क्रैशिंग प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे. क्रैशिंग प्रोसीजर, पहले एज यूजुअल टेक द डेटा, ड्रा द नेटवर्क and identify critical path. Draw the network and identify critical path. ये बात बताओ हमको, कौन सा एक्टिविटी को आप क्रैश करना चाहिए? क्रिटिकल एक्टिविटी, नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी? क्रिटिकल एक्टिविटी को क्रैश करेगा, नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी को क्रैश करेगा? प्लीज अमन जी बताओ. अमन, क्रिटिकल एक्टिविटी को क्रैश करेगा, नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी को क्रैश करेगा? अमन गारू, अमन गारू, क्रिटिकल एक्टिविटी, नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी? वी आर गिविंग path ACE 12 days, ADF 11 days, BCF 15 days. 15 days तब मिलेगा अमन जी, जोर से मिल जाएगा तब. सो यू नीड टोटल 15 days टू फिनिश द प्रोजेक्ट. अरे आप ये क्रिटिकल एक्टिविटी ये या ई इनको कम करो, ये 12 days बिकम 10 days हो जाएगा. बट इज देयर एनी टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन रिड्यूस करेगा? टोटल ड्यूरेशन रिड्यूस करेगा क्या? 10 11 15 में अगेन टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 15 ओनली. यू रिड्यूस 11 days to 8 days. इज देयर एनी इफेक्ट ऑफ टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन? सो यू नीड टू रिड्यूस काउंट इसको, क्रिटिकल पाथ को रिड्यूस करो. ये 15 13 होगा. नाउ व्हाट इज टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन फाइनली? फर्स्ट पाथ 10 days हो गया, नेक्स्ट पाथ 8 days हो गया, लास्ट पाथ 13 days हो गया. नाउ व्हाट इज टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन? क्रैशिंग करा दिया नहीं करा दिया? क्रैशिंग हो गया नहीं हो गया? सो हाउ मेनी डेज क्रैशड बाय हाउ मेनी डेज? 2 days. मींस व्हाट यू वांट टू चेंज नाउ? इसको क्रैश करना पड़ेगा. अभी बताओ हर एक आदमी, अभी बताओ हर एक आदमी किसको क्रैश करना पड़ेगा? किसको क्रैश करना पड़ेगा? क्रिटिकल एक्टिविटी, क्रिटिकल पाथ को क्रैश करना पड़ेगा. क्रिटिकल पाथ को क्रैश करना पड़ेगा. चलो नेक्स्ट, नेटवर्क ड्रा किया, क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफाई कर दिया. नाउ फाइंड cost to slope for each critical activity. Find cost to slope for each critical activity. What is cost to slope formula? CS CC minus NC, NT minus CT. CC minus NC, NT minus CT. Find cost to slope for each critical activity. Next क्या करेगा? Select the critical activity. Select the critical activity based on what? Based on what? Whose cost to slope less than indirect cost? Are you going to crash a critical activity cost to slope greater than indirect cost? बताओ बेटा, can you crash a critical activity whose cost to slope is greater than indirect cost? No. So select the critical activity whose cost to slope is less than indirect cost. Reduce its duration up to maximum possible. Reduce its duration up to maximum possible. So इसको duration कम कर दिया. Now क्रिटिकल पाथ चेंज हो जाएगा. नेटवर्क डायग्राम में क्रिटिकल पाथ चेंज हो जाएगा ना? हो जाएगा. सो कंटिन्यू द प्रोसेस, रिपीट द स्टेप्स, कंटिन्यू द प्रोसेस. कब तक बेटा? कंटिन्यू द प्रोसेस टिल क्रैश कॉस्ट ग्रेटर देन इनडायरेक्ट कॉस्ट. दैट इज एंड पॉइंट ना? दैट इज एंड पॉइंट ना? यू आर रिपीटेडली क्रैशिंग. एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 3, एक्टिविटी 5 क्रैश करके चल रहा है टिल फाइनली वेयर एट व्हाट पॉइंट वी कैन स्टॉप? वी कैन स्टॉप व्हेनेवर क्रैश कॉस्ट इज ग्रेटर देन इनडायरेक्ट कॉस्ट. समझ आ रहा है? We can stop whenever crash cost is greater than indirect cost. So to crash, what you require? Maximum cost to slope or minimum cost to slope? To crash an activity, what is required? To crash an activity, what is required? बताओ बेटा, to crash an activity, minimum cost to slope required. Minimum cost to slope required.
So you have given the graph, a graph diya hum, a graph dal diya, 1 minute. So when you have drawn this graph, you are connecting these 2 points. समझ लो. You are connecting this crash time, normal time, crash cost, normal cost. इधर आएगा ना slope. When you draw in the form of a straight line, when you draw both points are connected as a straight line, this is coming now. This is called cost slope. That is called cost slope. Understand? Understand? A curve ऐसा आ गया, 2 points connected one another. A 2 points connect करके straight line बना दिया. Whatever coming that theta, tan theta for it. Tan theta for it is cost slope. चलो we'll move on now. Shall we continue? Next slide. Shall we move? बताओ जल्दी. एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे. आपका फुल टू फुल पूरा समझ आएगा. वन न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क को चल रहे हैं हम. मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क को चल रहे हैं. इसके बाद और 2 चैप्टर है ना, और 2 चैप्टर है. Till now there are no questions, Revant. This is the only topic. This one and resource allocation, crashing and resource allocation are the only topics left over in GATE. So we expect in all topics questions came. Only these 2 topics questions are left over. So that we are expecting activity, predecessor, normal time, normal cost, crash time, crash cost. Activity, predecessor, normal time, normal cost, crash time, crash cost. So ये सुनो अच्छे से, very very important point I am going to tell now. You have given ये 5 days normal time. Crash time is 2 days. What is the meaning of it? What is the meaning of it? It is the lowest possible time required to finish the activity. So it is the lowest possible time ना बेटा. You can finish that activity at least 2 days required minimum. 2 दिन चाहिए. इनका कम आप crash मत करो. इनका कम crashing मत करो. You can make 5 days to 4 days. You can make 5 days to 3 days. You can make 5 days to 2 days. You can't make to 5 to 1.5. Even 5 to 1.9. 5 days को 2 days में करना चाहिए बस, और कम days में नहीं होना चाहिए. So you can write 1 point here. Then you can write crash time, lowest possible time, lowest possible time to finish activity, to finish activity. Less than that, activity not completed, activity not finished. Means you must allot that time compulsory. Must allot a time for activity. Must allot a time for activity. ये पक्का allot करना पड़ेगा activity को. Must allot a time. समझ आ रहा है? Must allot a time for the activity. चलो done. Finish ये लिखना. So now we will check how many maximum days we can crash the project. This is given. Now we will check how many maximum days we can crash the project. So solution में first काम क्या है हमको? Solution में first काम क्या है बेटा? Network diagram बनना पड़ेगा. Network diagram बनना पड़ेगा. 2 activities are coming. A and B. A is going to C. B is going to D. हो गया? A B C D. हो गया A B C D. देखो, एक काम करो. 1 minute. We'll draw here because that will be required a big diagram. ये के लिए नॉर्मल टाइम 5, बी के लिए नॉर्मल टाइम 3, सी के लिए डी के लिए 4 4. सो इट इज क्रिटिकल पाथ. नाउ क्रिटिकल पाथ बोलो बेटा. क्रिटिकल पाथ एसी 9 days. ओके, हैप्पी. एसी 9 days आ गया. चलो कास्ट स्लोप, हर एक एक्टिविटी को कास्ट स्लोप ढूंढ लो. बताओ प्लीज पहले, हर एक एक्टिविटी को कास्ट स्लोप ढूंढ लो पहले. प्लीज टेल मी व्हाट इज कास्ट स्लोप फॉर एवरी एक्टिविटी. कास्ट स्लोप फॉर एवरी एक्टिविटी 300, 100, 200, 150. 300, 100, 200, 150. Okay, done. 300, 100, 200, 150. So here there is no information about indirect cost. So you can crash up to maximum possible days. You can crash now. There is no information about indirect cost. You can crash up to maximum possible duration. So AC is 9 days. BD is 7 days. First, what can we do? We can crash. Make this. What is maximum possible time for A to crash? Maximum possible time to A to crash up to 2 days. 3 दिन crash करो. 3 दिन crash करो A को 3 दिन crash करो. Make it 3. Sorry 2. Make it 2.
Then what is crash cost? Crash cost for A 3 days हर एक दिन को 300 900 rupees 3 days हर एक दिन को 300 900 rupees. You can crash C now. You can crash C. This C. Again 3 days crash करेगा ना. It can be finished in 1 day. It can be finished in 1 day. So एक दिन में हो जाएगा. एक दिन में हो जाएगा. So again C crashed. हर एक दिन को 200 rupees. हर एक दिन को 200 rupees. 600. So project is crashed. What is critical path for this now? What is critical path for this now? Project is crashed full to full. What is critical path for this? Yes, BD हो गया. BD 7 days. AC 3 days. So now can you crash BD? Can you crash BD? बताओ बेटा, can you crash BD? Yes, you can go na. B can be reduced by how many days? B can be reduced by how many days? Everyone please answer. B can be reduced by how many days? B can be reduced by maximum 1 day. 1 day crash कर दिया. Now for B 1 day हर एक दिन को 100 rupees. 1 day only. चलो. Now D can be reduced by how many days? D can be reduced by how many days? ये कौन है बेटा? रेवंत जी. C minimum time required is 1. Means you reduce how many days? You reduce how many days? Reduced by 3 days na, crashed by 3 days na. So that is why we are taking. चलो. This is reduced now. 2 days कर दिया. D के लिए 2 days. हर एक दिन को 150. 300. So what is now CP? What is now CP? Because B 2 days only na, lowest time possible. Lowest time possible. So you can crash by 1 day only na. Crash by 1 day only na. This लिखो. Activity can be crashed for how many days? A duration of activity can be crashed for a duration of NT minus CP. हो जाएगा ना? Activity can be crashed for a duration of NT minus CP. Then it will be easy for you. 5 minus 2 you can crash for 3 days. 3 minus 2 crash for 1 day. 4 minus 1 crash for 3 days. 4 minus 2 you can crash for 2 days. So an activity can be crashed for a duration of NT minus CP. That is only taken number. हम डिनोमिनेटर में क्या ले लिया? हम कास्ट स्लोप का डिनोमिनेटर में. कास्ट स्लोप का डिनोमिनेटर में क्या ले लिया बेटा? NT minus CP भी ले लिया ना. चलो अभी बताओ CP क्या है? CP BD 4 days. AC 3 days. AC 3 days. Okay. What is total cost? 1900 rupees. 1900 rupees. So total project duration is 4 days. Can you crash further? Can you crash further? Okay. Not possible ना? Further crashing नहीं हो जाएगा. Okay, ये बात बताओ please. 1900 rupees came ना crash cost. Is there any possibility to reduce crash cost? Is there any possibility to reduce crash cost? बताओ बेटा, is there any possibility to reduce crash cost? 1900 rupees is crash cost. Critical path is 4 days. Total project duration is 4 days. Is there any possibility, Aman Garu? अरे हर एक आदमी बताओ ना आंसर. Is there any possibility? Yes, there is a possibility. Instead of crashing A 2 days, you can make to 3 days. Instead of crashing A to 2 days, you can crash for 3 days. 3 plus 1 4 days, no problem. If you take this as 4 days also, is there any change in project duration? Is there any change in project duration now? Is there any change in project duration? Now you can take here. Now you can take here. Instead of 3 into 300, what we can change? 2 into 300. Only 600 rupees. So what is the change in crash cost now? Crash cost is 1600. Decrease हो गया crash cost. Decrease हो गया crash cost. Mahima, you are giving the path. You are considering the path. 1 minute. You are taking A 2 days, C 1 day, AC become 3 days. But as BD is 4 days, maybe AC completed in 3 days, but still project completion is not 3 days, it is 4 days. समझ आ रहा है? AC is completed in 3, but BD is taking 4. What is the CP? CP is 4 days only. Then why unnecessarily crashing A? You can crash A 5 days to 3 days, no problem. So that you can take 3 plus 1 4 days हो जाएगा. Any problem हो जाएगा? Any problem हो जाएगा? 3 plus 1 4 days हो जाएगा ना? समझ आ रहा है बेटा? You are taking AC 3 days, BD 4 days. But total CP value is the same, fixed 4 days only. So instead of that, we are taking AC 4 days, BD also 4 days. Is there any change in CP? CP is 4 days only. Na? CP is 4 days only. Na? So you crashed for to achieve 3 days. You crashed A 5 to 2 days. Instead of doing it, you crash A 5 to 3 days. So that A 3 days, C 1 day, total 4 days में खत्म हो जाएगा. Cost क्या हो जाएगा बताओ अभी? ये 2 दिन crash हो गया. 2 दिन crash करने के लिए 300 है. 2 into 3 600 only. Previously 3 दिन crash हो गया. 3 into 3 900. ये 300 कम हो गया. Crash cost कम हो जाएगा 1900 to 1600. Is there any effect on total duration? Is there any effect on total duration?
So we can go for it. We can go for it. So we can go for this. This is the best path we can go. समझ आ रहा है? 300 rupees savings are there. 300 rupees savings are there. AC 4 days, BD 4 days. Here shall we move now? Yes, correct. Yes, Garu, correct. Shall we move further? Is that clear, guys? Shall we move further? चलो बताओ जल्दी. So please read properly. Give the answer properly. अच्छे से पढ़ लो. आंसर दे दो पढ़ने के बाद. जल्दी जल्दी मत दे दो. जल्दी जल्दी मत दे दो. नवनीत भारद्वाज, मेसी, देवू मालिया, श्रीजनी, दीपक, षष्ठी, वेरी गुड. वेरी गुड अनंत. Nice, Gyanendra, keep going. Crashing is abandoning project, means rejecting or stopping project. No, completing the project with all possible difficulties. हम कभी भी difficulties का बारे में कुछ नहीं बात किया. Reduction of duration. What is our primary target, primary objective? Yesterday first line अच्छे से पढ़ लो. What we have written? Yesterday notes में crashing heading डालने के बाद, chapter 6 crashing डालने के बाद immediate line पढ़ लो बेटा. Decreasing project duration. Decreasing project duration. हाँ, whatever you can do for few activities and thereby project duration. Few activities को time कम करो, few activities को time reduce करो, total duration कम करेगा, total duration कम करेगा. And along with that, voluntarily cost increase हो गया, decrease हो गया, हो जाएगा. हमारा primary objective is duration. Secondarily we ensure cost ज्यादा नहीं चाहिए, equal हो जाएगा बस, but ज्यादा नहीं चाहिए ना. That is why cost slope must be less than indirect cost. लिख दिया ना? Cost slope must be less than indirect cost, but not greater than means you are not allowed to increase. But at the same time, cost is not primary, cost is secondary, duration is primary. Duration is primary for us. So that is why answer is here. No, MSQ में भी होगा तो भी C, because nowhere here they are talking about cost. In duration, D में कुछ duration का बारे में बात किया, duration का बारे में reduction of duration बात किया. No, reduction of cost and reduction of duration. Okay, but कुछ नहीं लिख दिया cost के बारे में. So option C only. You need this one, Messi Garu. This one. Done. In any crash program for a project. In any crash program for a project. I will give poll. Try करो. आप सोच लो. Try करो. दे दो. अरे मेसी गारो ऐसा क्यों कर दिया आप? श्रीजनी, यश, अनास, अमन, षष्ठी, भरद्वाज, देवमालिया, गौतम, नवनीत, आकाश, मीना, वेरी गुड. रेवंत, कीप गोइंग. ज्ञानेंद्र, नाइस. Yes, perfect. Direct cost involves material cost. Messi garu. Direct cost involves material cost. Then equipment rent. Then it involves human resources cost. So human resources, whatever increase, that will be given to crash cost. So total direct cost is always constant. Na? Total direct cost is always constant. Na? There is no change in total direct cost. Total direct cost में change नहीं हो जाएगा. Whenever you talk direct cost modification, whenever you talk about direct cost modification, then ABC कम हो जाएगा, कट हो जाएगा. Total project cost decreases up to optimum and then increases. It can be explained by this curve. This is a curve of total project cost versus a time. Total project cost versus a time. This decreases up to optimum. Then after optimum, what happened? What happened after optimum? अमन गारू, अमन बेटा, आपको एक इक्विपमेंट बना दिया, एक इक्विपमेंट दिया आपको. आप ये इक्विपमेंट को 24 आवर्स यूज करने के है, परमिशन नहीं था. इक्विपमेंट 8 घंटा यूज करना पड़ेगा. 8 घंटा का ज्यादा यूज करने के बाद ज्यादा पैसा देना पड़ेगा. You are taking a car on rent. So can you drive the car for 24 hours? They allow per day only limit 300 किलोमीटर. 300 किलोमीटर का एक दिन का ज्यादा हो गया, then हर एक किलोमीटर का और ज्यादा पैसा देना पड़ेगा फिक्स अमाउंट के बाद. So this is optimum. 300 का ऊपर हो गया आप, then cost increase हो जाएगा ना. So equipment होगा तो भी, maybe you are making the people who give rent for the equipment full, but everywhere that's not possible ना. कार रेंट को ले लिया आप, एक दिन में 500 किलोमीटर चले गए,
Can you pay same amount? They will fight with you ना. You talked for 300 kilometer, then remaining 200 को extra देना पड़ेगा, additional amount देना पड़ेगा. Driver को भी extra OT देना पड़ेगा. Driver can drive only 300 kilometer per day. He is driving extra double. You can pay double the salary for the driver also. Equipment सिर्फ equipment नहीं आएगा, equipment operate करने के लिए operator आएगा. And you are carrying a total station को rent को दिया. Yes, total station से आप काम करो, हमारा आदमी आएगा काम करने के लिए बोल दिया. Operator को total station rent 5,000 per day. Operator cost 8 hours काम के लिए 2,000 rupees. Then काम और ज्यादा हो गया, 8 hours काम 12 hours हो गया. Then ये बोलेगा आदमी को, अरे टोटल स्टेशन 8 घंटा भी करना पड़ेगा, 12 hours के लिए 7,500 और एक्स्ट्रा पर्सन को 3,000. Then हो जाएगा भाई पैसा. For a network analysis, the crashing activities along the critical path is done starting with the activity having. Please tell me. Starting with the activity having. किससे करेगा हम? Crashing is started with. Crashing is started with. Very good. Very good, beta. Keep going. इतना fast. Very good. For a network analysis, crashing activities done along a critical path. थप्पड़ मिलेगा देवू मालिया गारू को. अरे एक आदमी से थप्पड़ दे दो. You are going to crash. You are going to crash a critical path activity. This is a critical path activity ACE. Critical path activity ACE, for example, 15 days. Okay. Now, सुनो बेटा, सुनो ध्यान से सुनो. A is having 5 days. C is having 7 days. E is having 10 days. Then cost to slope लिख दिया. Cost to slope लिख दिया. A को 100 rupees. C को 300 rupees. E को 600 rupees. Now I need to reduce 15 days to 14 days. So are you going to reduce E? Are you going to reduce E? C, A बताओ. किसको reduce करेगा आप? अरे भाई, according to your answer it should be ना. According to your answer it should be ना बेटा. As per your answer, longest duration किसको है बताओ बेटा. किसको दे रहे हैं आप? Crashing किसको कर रहे हैं? Longest duration को कर रहे हैं ना. Longest duration को करेगा बताओ. अरे चप्पन मिस्सी अंकुल, E crash करो, E crash करो. हमारा टारगेट एक दिन कम करना पड़ेगा within lowest possible cost. Crashing of one day within lowest possible cost. What is lowest possible cost? Lowest possible cost is 100 rupees. 100 rupees least cost is low. It's not longest duration. समझ आ रहे? अमन जी क्वेश्चन समझ आ रहे? देबू मालिया, इनको थप्पड़ रिटर्न दे दो आप. एक्स्ट्रा 2 थप्पड़ देके रिटर्न दे दो हर एक आदमी को. Clear guys? Now you understand? ये बचपन से पढ़ रहे. Since his birth he is studying here. Aman Garu. This is done already. Okay. Time cost to study for a project. Time cost to study for a project must be adopted only when project duration is to be crashed. नहीं होगा तो if crashing possible होगा तो time cost study को चलेगा. Crashing नहीं possible होगा तो time cost study का जरूरत क्या है? If you are capable of crashing, then you talk how many days to crash, how much cost is required, cost is positive, negative. ऐसा बात करेगा. Crashing possible भी नहीं हो जाएगा. Crashing possible भी नहीं हो जाएगा. क्या करेगा? No, देबू मालिया क्या हो गया बेटा बताओ. True only ना. This is the true only ना. Are you going, if you are not able to crash the project, can you go for time cost study? Then if you are able to crash, then only you can study time cost study. True. When there are unmanageable restrictions in realizing a predetermined resource histogram, time cost study may have to consider extension of project duration as well. When you are unable to manage the project to be extended, ultimately time cost study to consider extension of project also. अरे आप प्रोजेक्ट 2 साल में खत्म करने के प्रोजेक्ट ले लिया, बीच में कोविड आ गया, आपका हाथ में नहीं था ना कोविड का लॉकडाउन. हमारा मोदी गारू 10 दिन बोल दिया, 10 दिन वो 3 महीने करा दिया, 10 दिन से 3 महीने करा दिया, 3 महीने से 6 महीने करा दिया, हमारा हाथ में नहीं, अनमैनेजेबल. Then after that again you can reschedule the project, you can study again, time cost study, extended time लेना पड़ेगा. True. But they are independently true, not at all related. Independently true. Independently true. So that we are going for B. So that we are going for B. समझ आ रहा है बेटा? चलो. एक बार लेक्चर और देखना पड़ेगा. क्या हो गया? क्या one only there is there, so I told false. What is one only? Okay, adopted only. This one. हाँ, time cost study for a project must be adopted only when project duration is to be crossed. Okay, understood. Adopted. 1 minute guys. So we can go ahead in both cases ना. Crash करने के बाद भी, extended करने के बाद भी. Both cases में हमको चाहिए ना time cost study. Good, देबू गारू. When you are crashing, when you are extending, दोनों चीज में time cost study होना चाहिए नहीं चाहिए. When you are crashing project 15 days to 10 days, when you are extending project 15 days to 20 days. So इधर only लिख दिया. Adopted only नहीं होगा true हो जाएगा. Only नहीं होगा true हो जाएगा. Only is there ना, only is there, so false. Very good. Keep going. देखो answer is C. Only लिख दिया ना only. So answer is D. D. Very good. Nice. आपको शादी हो जाएगा this year. Don't worry. This year पक्का शादी हो जाएगा. Don't worry. Okay guys, we'll continue tomorrow. Done. We'll continue tomorrow. So we have today 5:30 environmental BOD test रखेंगे. Today we are going to do BOD test. 9:30 में concrete. Same like yesterday 9:30 में concrete. There is no 2 PM class today. आज भी रेस्ट ले लो मेसी अंकुल. चलो guys. Bye bye.